So like if given a choice to see, let's just say Arbaaz in a highly romantic role, they have this like they have Salman, Shahrukh, Amir, Akshay, Shahid Kapoor, सैफ अली खान, 50 लोग हैं जो देखने के लिए कि भाई वो है ना, वो उनको देखने दो, आप ये सीरियस रोल्स करो। जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंगेजिंग लगा। उसके 3 सीजन थे, वो तीनों के तीनों सीजन मैंने एक साथ देख लिए। और जैसे कि हर कोई कर रहा था बीच में बिंज वॉच कर रहा था। एंड मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा शो, और हमारे यहाँ भी ऐसे शोज बनने चाहिए, और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी इस ऐसे शो में काम करने का मिलना चाहिए। एंड आई जस्ट थ्रू दैट थॉट इन द यूनिवर्स, प्रॉब्ली आई वुड से, माय डिजायर टू वर्क ऑन अ शो समथिंग लाइक दिस। मैंने अपनी पहली फिल्म से लेके अब तक किसी फिल्म में रियलिस्टिकली कोई ऑडिशन दिया नहीं था। ये थोड़े पुलिस ऑफिसर के या थोड़े से आर्मी के रिलेटेड या थोड़े से स्ट्रॉन्गर रोल्स मैंने किए हुए हैं। तो उनमें से भी कैसे मुझे हट के अलग करना था। तो अगर आप देखोगे, अभी अपीयरेंस भी देखोगे, तो you will tell कि it's a little different from the work that I've done. It's a show which I've called The Invincibles, and I have done interviews with with legendary people. Actually, don't have too much of shows where we have documented some of our very legendary people. Like I don't see, people like Dev Saab, people like Raj Kapoor Saab, people like Shami Kapoor. So many हमारे जो R.D. बर्मन जी थे, इतने लोग हमारी इंडस्ट्री में थे, और बहुत डिटेल में हमने किसी को डॉक्यूमेंट नहीं किया मेरे हिसाब से। सो आई गॉट दिस आइडिया फ्रॉम watching my father, and I'm like, my dad is now at that stage in his life where he's done so much of body of work, and we are in this industry because of him. वो मेरे सीरीज के अंदर मेरे पास डैड है, जावेद साहब है, हेलन आंटी है। I'm doing a film called Patna Shukla. I think I've made a small announcement, and with a very deep social message in it. So it ticks a lot of boxes. It's a very heartland film. It's a very home film. It's a very women-oriented film. So I'm quite excited about it. Hello, everybody. Welcome to News 18 Showsha. My name is Bohni, and I am here with actor Arbaaz Khan talking about his new show Tanaav on SonyLIV. Hi, Arbaaz. Welcome to News 18 Showsha. How are you? Hi, thank you very much. Thank you. Great. So, Tanaav, Arbaaz, tell me, what's your role in the show and what made you take this one up? Okay, so what made me take the show on, पहले उस पे बात करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान हम सारे लोग बहुत सारे वेब शोज वगैरह देख रहे थे। तो मैं भी देख रहा था, और किसी ने मुझे रेकमेंड किया था कि एक शो है फौदा करके, वो देखो। तो काफी दिनों से मैं दूसरे शोज देख रहा था। आई डेंट फाइंड टाइम टू वॉच दिस शो, बट वन डे आई जस्ट सेड कि चलो, इसकी रिकमेंडेशन भी काफी अच्छी है, मैं देख लेता हूँ इसको। जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंगेजिंग लगा। उसके 3 सीजन थे, वो तीनों के तीनों सीजन मैंने एक साथ देख लिए। और जैसे कि हर कोई कर रहा था बीच में बिंज वॉच कर रहा था। एंड मुझे लगा कि यार ये बहुत अच्छा शो, और हमारे यहाँ भी ऐसे शोज बनने चाहिए, और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी इस ऐसे शो में काम करने का मिलना चाहिए। एंड आई जस्ट थ्रू दैट थॉट इन द यूनिवर्स, प्रॉब्ली आई वुड से, माय डिजायर टू वर्क ऑन अ शो समथिंग लाइक दिस। एंड इट सो हैपेंड दैट 8 महीने बाद के करीब मुझे अपलॉज फिल्म से एक मैसेज आया कि दे आर लुकिंग टू डू एन अडेप्टेशन ऑफ this Israeli show Fauda, and they're looking to cast me in one of the important roles. And उसके लिए मुझे एक छोटा सा ऑडिशन मांग रहे थे कि भाई they wanted to just see a look and appearance and कैसा आएगा। तो वो मुकेश छाबरिया के ऑफिस से एक रिक्वायरमेंट आई, वो मैंने उनको करके दे दी। और फिर 1 या 2 दिन चले गए बिफोर आई कुड गेट एन आंसर। देन आई गॉट एन आंसर दैट दे आर हैप्पी, बिकॉज वो मल्टीपल लेवल्स पे वो अप्रूवल होता है, मतलब डायरेक्टर से होता है, प्रोडक्शन हाउस से होता है, चैनल से होता है। तो उन सब से जब एक बार मिल गया कि हाँ, ही इज लुकिंग राइट फॉर दिस रोल, in spite of the fact that I had done a lot of work in the past, I felt very like excited about doing an audition. And आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने अपनी पहली फिल्म से लेके अब तक किसी फिल्म में रियलिस्टिकली कोई ऑडिशन दिया नहीं था, बिकॉज इट वाज जस्ट क्वाइट सरप्राइजिंग। बट वी यूज्ड टू गेट कास्ट प्रीटी मच कि भाई इसको ले लो। डायरेक्टर या तो कॉन्फिडेंट होता है या प्रोड्यूसर होता है। तो ऑडिशन का जो दौर है वो लास्ट के कुछ सालों में काफी हो गया, बिकॉज पीपल आर लिटिल पर्टिकुलर अबाउट who they cast, whether they look right, their dialect is right, whether their appearance is right. So now that kind of become quite a trend, and it should be actually. It was a good experience. So I got cast on that role, and that role is of a special task officer. Team है उसका मेन हेड ऑफिसर है, जो जो एक मिशन के लिए
क्या बोलते हैं एक टीम इकट्ठा करता है, and he knows that who are the right people to go on this mission, and he handpicks those people for that mission. And so my character is that character who is basically giving gets the team together and gives instructions. आपने देखा होगा कि मेरा जो पोस्टर में भी जो है वो एक वो लगा हुआ है हेडफोन के साथ माइक. So pretty much most of my thing is about giving commands and all that stuff. So but it's a very good role. And yeah, so I enjoyed doing it. We had to work on the look. We had to work on the basic attitude, and also a bit of styling and all that, which we've done to make it real different from the roles that I've done in the past. Because कुछ हद तक ये थोड़े पुलिस ऑफिसर के या थोड़े से आर्मी के रिलेटेड या थोड़े से स्ट्रॉन्गर रोल्स मैंने किए हुए हैं, तो उनमें से भी कैसे मुझे हट के अलग करना था. तो अगर आप देखोगे अभी अपीयरेंस भी देखोगे तो you will tell कि it's a little different from the work that I've done. But then I was going to ask you, men in uniform is something you've played before, and is it something that really attracts you, roles like this? I think yes, because everybody has a personality which sometimes fit certain kind of roles better. And I think that's not a very bad thing. तो कभी-कभी I think एक image आप के साथ जो जुड़ा हुआ था वो आपको help करता है, उसमें सिर्फ आपको वेरिएट करना पड़ता है, ताकि क्योंकि ऑडियंस आपको कभी-कभी एक पर्टिकुलर इमेज में पसंद करती है. Like I'm just giving, let me give you an example of one Hollywood film. अभी श्वार्ज़नेगर है या स्टेलोन है या डिनीरो है या जो भी है, इनकी एक इमेज बन गई है, राइट. वो जब उसी मोल्ड में करते हैं फिल्म में तो लोग पसंद करते हैं. अब वो दे विल डू चेंज के पता चला रोमांटिक कर लिया या कॉमेडी कर ली, जो क्योंकि उन वो उस चीज के लिए अलग एक्टर्स हैं. सो इफ यू हैव टू सी somebody in an action role, you rather see somebody who's already done it and who's good at it rather than him attempting to do something in which there are already people who are doing a very good job at it. तो अगर मुझे कॉमेडी देखनी है तो मैं कोई और एक्टर को देखूंगा जो मतलब ज्यादा कॉमिक एक्टर है इस मामले में. जी. ऐसा ही होता है. लाइक सो लाइक इफ गिवन अ चॉइस to see, let's just say, Arbaaz in a highly romantic role. They have this, like they have Salman, Shahrukh, Amir, Akshay, Shahid Kapoor, सैफ अली खान, 50 लोग हैं जो देखने के लिए कि भाई वो है ना, उनको देखने दो. आप ये सीरियस रोल्स करो, because it has to be very done very distinctly, because that's what you have to find out. Okay, where does the audience like you, and you should do those roles and vary it in that, because then that's your minimum guarantee of being liked by the audience. But you did Poison before this, now Tanaav. How are you liking working for OTT? See, it's no different working on a OTT set and working on a film set is realistically not any different. Particularly the people that I've worked with, and particularly now who I've worked with, Sudhir Mishra is basically a film director. So even the atmosphere on the shoot was more like a film-like shoot. So it's no different. And you don't take very different skills to an acting to OTT sets than what you would have taken to a film set. You take your entire skills that are there, and it doesn't matter. It's just that the format and the presentation seems to be different. Like it's being projected on a different platform or a medium. Like your work goes either on screen or whether it goes on a television set or on a phone or wherever it is. But you don't have a different acting style for that. You do what you have to do, right? वो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है. Arbaaz, are you coming back with your chat show? So I have done something very different at this point in time. Pitch was a show that I've done 2 seasons of it, and I've been very fortunate. They've been very well received, and they were very good shows in that sense. But now I've done something which I'll just brief you about, which I'll most probably be looking for sometime of this end of this year release or maybe early next year. It's a show which I've called The Invincibles, and I have done interviews with with legendary people, who I consider who are people who have been great contributors, to the film industry, and who are achievers in their own rights, who are like stalwarts in their own rights. We actually don't have too much of shows where we have documented some of our very legendary people. Like I don't see people like Dev Saab, people like Raj Kapoor Saab, people like Shami Kapoor, so many हमारे जो R.D. Burman जी थे, इतने लोग हमारी इंडस्ट्री में थे, पर बहुत डिटेल में हमने किसी को डॉक्यूमेंट नहीं किया मेरे हिसाब से. We don't have things like अगर आप जाओ आर्काइव्स में तो पता चला कि उनके लाइफ टाइम के ऊपर उन्होंने अपनी जिंदगी में बातें की हैं, या उनकी किताबें लिखी गई हैं, या तो उनकी ऑटोबायोग्राफीज हो, या उनकी कोई क्या बोलते हैं
बायोग्राफीज किसी ने लिखी हो, हम बस थोड़े थोड़े इधर उधर से हमारे पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, कहीं उनके उनके 10-12 इंटरव्यूज अलग अलग किस्म के हैं तो उनको हमने, बट एक टाइम पे बैठ के कोई एक किताब या कोई एक इंटरव्यू जो उनको पूछा गया है कि आपकी जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, या आपने कैसे कैसे अपना काम मिला, क्या आपके जिंदगी के हाईज थे, लोज थे, सेटबैक्स थे, डिफिकल्टीज थी, वो हमारे पास है नहीं। हम लोगों ने, और भी इसको ले ले तो अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे लोग हैं, और सिर्फ एक फील्ड में नहीं है, हर फील्ड में है। मतलब राइटिंग में है, आपके कैमरा वर्क में है। हु वुडंट वांट टू सी अ ग्रेट लेजेंडरी कैमरामैन डॉक्यूमेंटेड? व्हाई नॉट? आज अगर आप जाते हो तो ये सारे जो ऑस्कर विनिंग कैमरामैन है, उनकी इंटरव्यूज आप देखो तो आपको कितना सीखने मिलता है। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट डॉक्यूमेंटिंग मिस्टर बच्चन और सलमान खान और शाहरुख खान, इट्स नॉट जस्ट अबाउट देम। There are many people who need to be heard. Their stories need to be heard. And if they're willing, they can talk about not just their professional lives, they can talk about their personal lives, their personal struggles, their personal fights, their personal, So I got this idea from, watching my father. And I'm like, my dad is now at that stage in his life where, he's done so much of body of work, and we are in this industry because of him. Probably his grandchildren would not know where they came from, in the sense that कि कितना बड़ा हमारे ग्रैंडफादर क्या थे, उनको तो बस सिर्फ, तो उनको और आगे की जनरेशन को एक लेगेसी दिखाना कि भाई शुरू वहां से हुआ था, कि भाई let me speak to my father, but let me do it professionally and ask him from where he started, how was his journey. And I've done that interview, and then I realized that why stop at him? Then I got others to do this interview. So उस interview, वो मेरे सीरीज के अंदर मेरे पास डैड है, जावेद साहब है, हेलन आंटी है, महेश भट्ट साहब है, फिर वहीदा जी हैं, और क्या बोलते हैं, शत्रु जी हैं, एंड धर्म जी के साथ भी मैं करने वाला था, लेकिन he was not well around that time. I'm really excited and proud of it, and I think there's so much to learn, to the industry and to people, and that is something that is evergreen. क्योंकि वो जो चीज है, वो जो मिली है चीज ना मुझे, वो दैट इट्स नॉट रेलेवेंट टू टाइम। कि अगर आप अभी इस वक्त आप किसी के साथ इंटरव्यू ले लो, किसी स्टार के साथ इंटरव्यू ले लो, तो आप एकदम ही करंट टॉपिक्स के ऊपर और बड़े रेलेवेंट टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हो, तो उसका ह्यूमर या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो जो अभी इस वक्त जो जानते हैं उन्हीं के लिए, कल को 10 साल बाद कोई देखेगा, बोले यार इस बात पे क्या क्या कॉन्वर्सेशन थी, क्यों हंस रहे थे लोग। बट ये जो कॉन्वर्सेशन है ना, ये सबके लिए है, ये डजेंट मैटर, उनके जनरेशन के लोगों के लिए भी है, और आगे जनरेशंस के लिए भी है। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दैट इज देयर। इट विल कम वेरी सून, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड। आई हैव जस्ट लाइंड इट अप and I'm working on it now. One last question, Arbaaz. What's happening on the production front? There were reports about Dabang's script being worked upon. Production front. I mean, there were reports about I'm starting my own production right now. I'm doing a film called Patna Shukla. I think I've made a small announcement. Yes. So it's got Ravina in it. It's got Satish Kaushik ji in it. It's got Chandan Roy Sanyal in it. It's got Manav Vij in it. It's got Jatin Goswami in it and Anushka Kaushik in it. So it's a very interesting cast, and it's a very lovely, drama, political scenario kind of a film, and with a very deep social message in it. So it ticks a lot of boxes. It's a very heartland film. It's a very home film. It's a very women-oriented film. So I'm quite excited about it. And it's the story I wanted to tell. So it's like, for me, there's nothing like a very big film or a small film. It's just a film. वो बनने के बाद बड़ी होती है और छोटी होती है। वो कोई आप बड़ी फिल्म बना नहीं सकते और ना ही छोटी फिल्म बना सकते। वो छोटी फिल्म भी, मतलब जो in terms of what the perception is, can turn out to be a huge film. So for me, it's to tell a good story. So that's what I'm doing right now. Great. I was just asking if there's any status update on Dabang 4. As of now, no, because I'm somebody who concentrates on one thing at a time, at least particularly on the films. It's there in the pipeline, but I don't know what is the timeline when it'll happen. So it should happen sometime, but not doesn't look like in the near future. Okay. Great. But looking forward to Tanaav, and all the best for the series, and hope to see you more on OTT, and especially looking forward to the interview series that you've done when it comes out. Thank you so much for your time, Arbaaz. Please. Thank you.